नमस्कार माय फ्रेंड, आपका स्वागत है आज के इस लाइव इंटरव्यू में। और अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं या आप लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में हैं, म्यूचुअल फंड सेल करते हैं या एलआईसी बिजनेस में हैं, किसी भी तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में आप डील करते हैं और आप एक कामयाब लेवल पाना चाहते हैं इस बिजनेस में, तो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं एक ऐसे पर्सन से जो कि इस बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल है और 18 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। एंड आज आपको जो टिप मिलने वाली है तो बहुत ही आई वुड से पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन है। अगर आप इस इंटरव्यू को सुनेंगे तो आई कैन प्रॉमिस दैट योर बिजनेस विल ग्रो एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर। सो बिफोर आई मूव हेड, आई वांट टू इंट्रोड्यूस कमल। कमल, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। You're most welcome. Thank you. Great. So, Kamal, the first question I want to ask you that just tell me a little bit about your background, little bit background, so the people who are watching, they will also understand who you are and how do you came in this business. So, firstly, I thank you for giving me this privilege to share my experience with many people who are going to watch this video. So, I belong to a middle class family, and I am eldest one among my siblings. So, at the initial beginning of my career, I have to work early in my life. So, I joined one ICICI bank, direct DSA, to open bank account. Right. So when I was doing cold convincing, door-to-door convincing, I met a retired development officer who got me introduced to LIC, and he encouraged me to join LIC as an agent. Then he introduced me to a development officer. Then since then the journey started, and it has been so far very fulfilling and rewarding. Right. So अगर मैं आपकी सक्सेस की बात करूं तो आप एक कॉर्पोरेट क्वालिफायर है, कई साल से क्वालिफाई करते हैं और अभी भी लास्ट ईयर आपने 5 MDRT क्वालिफाई किए, व्हिच इज जस्ट वन स्टेप अहेड फ्रॉम द TOT. सो यस, ऑफ कोर्स सक्सेस इज देयर एंड जो लोग देखेंगे दे विल डेफिनेटली गेट लॉट ऑफ वैल्यू फ्रॉम इट. सो कमल, मैंने सुना है, लोग कहते भी हैं कि सेलिंग लाइफ इंश्योरेंस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, इज द हार्डेस्ट थिंग टू सेल लाइफ इंश्योरेंस, स्पेशली इन इंडिया. आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? ठीक सुना है आपने, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये टफ है। टफ क्यों है? क्योंकि कोई भी अच्छी चीज आप बेचने जाते हो, और वो ह्यूमन नेचर भी इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बोल सकते हैं। और ह्यूमन नेचर हमेशा नेगेटिव को पहले लेता है, पॉजिटिव को पहले बाद में लेता है। तो सेलिंग लाइफ इंश्योरेंस समथिंग दैट लाइफ इंश्योरेंस जो कंसेप्ट है, दैट इज वेरी मींस you do not want to accept it, right? It means someone will get the money when you die, and nobody want to die. So it has some financial gains, it has some value, it has some security, it has some value addition, wealth creation, but the name itself scare you. And और दूसरी बड़ी बात इसमें मुझे ये लगता है कि इसमें जो पेमेंट आपके पास जो रियलाइजेशन आता है थोड़ी लॉन्ग टर्म्स होते हैं, राइट? और वी पीपल वांट ए इमीडिएट रिवॉर्ड फॉर आवर सेक्रीफाइस, मतलब चाहे मनी के रिवॉर्ड में करो, चाहे टाइम के पॉइंट में करो। तो ये दो ऐसे फैक्टर हैं जिसमें आप कहीं ना कहीं डिस्करेज होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और इसी वजह से इंडस्ट्री थोड़ी सी और ज्यादा टफ हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर आप डेडिकेटली इस इंडस्ट्री में लगे रहते हैं, यू डोंट गिव इट अप, तो डेफिनेटली ये जर्नी बड़ी रिवॉर्डिंग हो जाती है। मतलब आप तपते रहते हो, तो कहीं कभी ना कभी सोना गलता है, पिघलता है, और उसमें से जो रियल गोल्ड वैल्यू है वो आपके सामने निकल के आती है। Yeah, rightly said, Kamal. In fact, I would say, Kamal, as a sales coach, मैं बहुत सारे लोगों के साथ में काम करता हूँ, स्पेशली फ्रॉम दिस इंडस्ट्री एंड अदर इंडस्ट्री से। आप किसी भी इंडस्ट्री को ले लो, शुरू में लगेगा कि आप वहां जाएंगे और आप कामयाब हो जाएंगे, बट इट विल टेक वर्क। आपको अपने आप को खपाना पड़ेगा उसमें। अगर एक राजस्थानी भाषा बोले तो लोटे का पेंदा आपको काला करना पड़ेगा, राइट? चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो या रियल एस्टेट इंडस्ट्री हो, किसी भी इंडस्ट्री में जब तक आप सीखोगे नहीं, आप देखोगे नहीं, आप रिजेक्शन मार्केट फेस नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा, तो हाउ कैन यू बी सक्सेसफुल? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? हाँ, ये बहुत जरूरी है कि आप तपते रहें, लेकिन वो तपने की गरमाई इतनी तेज होती है कि वहां पे मतलब आग के जितने पास जाते रहो उतनी ज्यादा उसकी गर्मी बढ़ती रहती है।
और कितनी देर आप वहाँ स्टे कर सकते हो, ये बड़ी मैटर करता है। तो काम या प्रोफेशन भी, स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस या सेल्स इंडस्ट्री, वहाँ पे आपके सामने टपना और कितनी देर तक कर सकते हो, ये बड़ा मैटर करता है। और जब आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हो कि हाँ मुझे आग के सामने किस तरह से अपने बॉडी को बना के रखना है, मेंटली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, देन यू आर अ विनर। तो फिर आपको वो समझ से, मतलब एक होती है गर्मी की समझ, गर्मी, मतलब गर्मी में हो और आग के सामने खड़े हो तो वो बर्दाश्त के बाहर है। लेकिन अगर वो गर्मी आप सर्दी में, विंटर में आग के सामने, बोन फायर के सामने हो तो आपको अच्छी लगती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप उस जर्नी को एंजॉय कर लेते हो और यू लर्न द आर्ट ऑफ फेसिंग द फायर, बोन फायर, तो वो आप बोन फायर विंटर फायर बन जाती है, राइट? आप एंजॉय करते हो। वेरी वेल सेड कमल, कि वो बोन फायर आपके विंटर फायर बन जाती है और यू स्टार्ट एंजॉयिंग इट। थैंक यू वेरी मच कमल। कमल, मैं आपसे सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहा हूँ, एंड आई नो दैट यू आर वेरी नाइस एंड जनरस ह्यूमन बीइंग, क्योंकि आज 4 साल से मैं आपके साथ काम भी कर रहा हूँ एज योर सेल्स कोच। बहुत सारे लोग हैं कमल जो कि फाइनेंशियल एडवाइजर बनना चाहते हैं, उनको पता है इसमें करियर अच्छा है, पैसा भी अच्छा है, लाइफस्टाइल भी अच्छी है। बहुत से लोग हैं जो प्योर प्योर इंश्योरेंस बिजनेस में रहना चाहते हैं, एलआईसी का काम करना चाहते हैं, और कर भी रहे हैं बहुत से लोग। तो आप शेयर करें, आपने अच्छा खासा मुकाम हासिल किया है, अच्छी इनकम है, सब कुछ ठीक है, तो क्या आप टॉप 3 सीक्रेट बता सकते हैं कि कौन सी वो टॉप 3 सीक्रेट्स हैं जो आपको वहां से, जहां पे आप कोल्ड कॉलिंग कर रहे थे आईसीआईसी बैंक के लिए, क्रेडिट कार्ड, व्हाटएवर प्रोडक्ट आपसे, वहां से लेके आपको आज इस मुकाम पे खड़ा किया, जहां पे आप एक अच्छी लाइफस्टाइल एंजॉय करते हैं, आपका एक रिस्पेक्ट है और आपके अच्छे खासे कस्टमर भी हैं और बिजनेस आपको काफी हद तक ऑटो पायलट मोड पे भी है, जो कामयाब होना चाहते हैं, उसके लिए आप प्लीज टॉप 3 सीक्रेट शेयर करें। ये आई थिंक बड़ा टफ क्वेश्चन है, मतलब इतना मतलब बोलना कि कौन सी बेस्ट चीजें हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं। ये सच बोलूं तो मुझे लगता है ये हर एक भगवान ने, ऊपर वाले ने हमको ना इंडिविजुअल बनाया है, एक यूनिक पीस बनाया है, मास्टर पीस है और हम सबकी यूनिकनेस अलग अलग है। फॉर एग्जांपल, आई एम वेरी इंट्रोवर्ट, आई स्पीक वेरी लेस, तो कहीं ना कहीं मेरी एक क्वालिटी बन गई है। सम पीपल एक्सट्रोवर्ट, तो दैट एक्सट्रोवर्टनेस हैज बिकम देयर क्वालिटी। बट आई वुड, अगर मुझे समराइज करना पड़े तो क्या होगा, तो मुझे लगता है नेवर स्टॉप लर्निंग। अपने लर्निंग को कभी भी बंद ना करें। बी ना, आप ना परफॉर्मेंस जोन में हमेशा होते हैं, लेकिन आप जोन को ना भूलें। डूइंग, परफॉर्मिंग एज वेल एज कीप लर्निंग। ओके, सो मैं बड़ा मुझे लगता है हम किसी भी प्रोफेशन में आपके पास लर्निंग कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। एज वेल एज यू कीप परफॉर्मिंग इन योर प्रोफेशन, एज वेल एज यू गिव सम टाइम टू योर लर्निंग आल्सो। सेकंड, आई थिंक बी एम्पैथिक। You have to show empathy to the people. When you show empathy, when you become compassionate, तो फिर आप सेलिंग से हट के एक अलग एनलाइटेंड वर्ल्ड में आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिजनेस को छोड़ दो, राइट? बिजनेस अपने आप ही मतलब जरूर आता रहता है आपके साथ में, और यू गेट अलोंग विद द पीपल। पीपल आपसे कंफर्ट हो जाते हैं, और जब पीपल आपसे कंफर्ट होते हैं, दे डोंट डाउट यू, दे एंजॉय, राइट? और जब आप जो एक ट्रस्टवर्दीनेस बढ़ जाती है एम्पैथी के साथ, कंपैशन के साथ, तो बिजनेस, आप क्लाइंट को बोलो लेफ्ट मुड़ जाए तो वो लेफ्ट मुड़ जाएगा, और राइट मुड़ जाए तो राइट मुड़ जाएगा। राइट, राइट। वो रिस्पांसिबिलिटी आपके शोल्डर में आ जाती है कि हाँ, आपने उसे लेफ्ट करना है तो लेफ्ट में उसका बेनिफिट है या नहीं है, राइट मुड़ना है तो राइट में बेनिफिट है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। इस तरह डेफिनेटली यू हैव टू बी मींस फोकस वेयर यू वांट टू गो, मतलब यू मस्ट हैव अ डेफिनेट गोल इन योर लाइफ। मतलब आपने इस प्रोफेशन को ज्वाइन कर लिया, जैसे मुझे 20 साल हो गए, 20 साल में मुझे बहुत क्लैरिटी नहीं थी कहाँ जाना है, राइट? तो वो एक गोल सेट करना अपने प्रोफेशन में, वो बहुत जरूरी है। विदाउट डेफिनेट गोल, लाइफ इज डायरेक्शनलेस। मींस कार स्टार्ट कर दी और आपने कहाँ जाना है पता ही नहीं, तो वो रैंडम जाने से अच्छा है कि अगर आप एक डेफिनेट गोल के साथ चलते हैं तो यू एंजॉय द जर्नी। और फिर मैंने आपको बोन का एग्जांपल दिया था, तो वो भी आपको हेल्प करती है कि वो कोई भी तमस या कोई भी गर्मी आपको बोन फायर लगती है जब आपके पास एक डेफिनेट गोल होता है। राइट।
तो मैं आपके तीनों चीजों को समराइज करता हूं। पहला आपने बोला you should be like the first what you have a what the first what is the first thing you said? I think you must have uh, you must be open to learning. Yeah, so learning. Sorry, the first you said be open to learn. Come what may, आप किसी भी लेवल पे हैं. Second you said you should have be focused, right? Taking action and being focused on that. Is that right? Second one is empathy. Empathy for the people. So I like it because you know what? बहुत सारे आपके इंडस्ट्री में लोग हैं and they are very clever kind of people, like cunning, clever, sharp people. उनका एक ही मकसद है, जब जाओ और बेच के आ जाओ, चाहे उसका भला है या नहीं है, उसको रिक्वायरमेंट है या नहीं है, बेच के आ जाओ. और बहुत सारे लोग मिस सेलिंग करते हैं और यही कारण है, बहुत बड़ा रीजन है कि वो लोग लाइक इस बिजनेस में कामयाब नहीं होते, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म सोचते हैं कि बस एक बार जाओ, एक ही बार पैसा बना के आ जाओ. तो एक अंदर से एम्पैथी फीलिंग नहीं है, व्हिच यू कॉल ह्यूमन टू ह्यूमन टच नहीं है. एंड यू राइटली सेड, इन फैक्ट आई नो अदर लॉट ऑफ सेल्स पीपल इन योर इंडस्ट्री, they all have this quality. They have a feeling for other human being. They have feeling that the empathy, right? Compassion, right? Thinking what they will go through it. So that's very rightly said, Kamal. And the third you said is what? Stay in the game. Have a definite goal. Definite goal, correct. So guys, इस चीज को सुन रहे हैं तो ध्यान रखिए तीनों चीजों को. आपको गोल भी रखना है, एम्पैथी भी रखनी है, and the best part is just get into the game. Is that right, Kamal? Yes. Thank you. So Kamal, I want to ask you one more thing. Like you joined me, I help, like I working with you more than 4 years, okay, as your sales coach. And when I started working with you, you are, I think, what, MDRT doing? Yes. And today you are about to close TOT. So share your experience working with me as your sales coach. So definitely, I always a firm believer. If you remember when you first time called me, I immediately invited you. Yeah. So I always had a conviction that means there must be someone who keep you alert, who keep you vigilant, who keep you right, and who can do it? Definitely not me. Definitely, if I have reached to that level where I know everything. I have so much discipline in my life. I'm so organized. I'm well planned. I'm not at all. I'm not at all. I'm not very well planned person. I'm not a very wise person. I'm not a disciplined person. So I need someone who can keep me aware about my lacunas, my mistakes, where I can do work. So there is a realization. As a human being, I see myself a perfect human being, but a person who's working with me, for example, you as a coach, always have empathy towards me. Through that, come on, these are the ways and direction you are deviating from your path. You just need a little bit correct. Realize it's like just for example, you are studying in school and there is always a bell rings after 45 minutes, right? That's why you as a coach always ring that bell. Are you in a learning zone? Are you studying? Are you focused? So that's why I give importance to each and every coach. Being a be a sports coach or a business coach or a life, you must have a mentor or a coach who can uh, take you, lift you, and motivate you. And the best part of the having a coaching is, I think, is realizing your true potential without helping you. Means you're not guiding me, Kamal, do this thing, do that thing. You're allowing me to explore my capability, right? Realizing my true potential in my life. And once I realize, so I don't need anyone. So, and the best part being a coach is you don't have an ego. You know that Kamal BABBAR is growing. He may not need my service. Still, that is the best part of being a coach, right? I think you as a coach also grown very well
and I could see that you as a coach has developed yourself in a very holistic manner. So I appreciate you for that. So really, in short, I got benefited where I have reached so far. Thank you very much, Kamal, for your word. So you said keeping you on the action zone, performing zone, alert. When you get distracted, come back on track, and making you to realize your true potential as a human being. Because a human being have a quality. I heard my mentor said, if an oak tree has a mind, it will only grow 3 feet, maximum 6 feet. It will never go to 15, 20 feet. That's the way human beings are. We never realize until we see that what is the possibility here, right? There's a lot of things should be done. Lastly, Kamal, I want to say one thing. I want to ask one question. That this COVID has come for a time. A lot of people are talking about this COVID and on and on. What do you think of as per this scenario? Anybody want to make it happen? What they should change in their business and their approach to successful in this industry? So as I said, that I'm very normal person, and I also impacted negatively also by in this COVID time also. Last year I did not well in my profession. This year I did very well in my career. In 2020 was not a good year in terms of profession in my business, but 2021 has been phenomenally great in comparison to what I did in last years. So I would say have a complete plan, keep working on your mission. What is your goal? And never give up. And definitely, so when you give up, when you're trying to give up, there is always a someone like coach, your family, yourself, uh, who helps you regain your motivation, your focus, right? And I would say in pandemic, firstly accept it. It's very difficult thing to not to accept it. Pandemic, yes, it is going to impact my business. What changes I need to do? Where do I stand? And what I can do? Means talk to your community, talk to your fraternity, talk to your coach, talk to your family. Seek help, seek help. And once you seek help, and again, uh, there are a lot of material available on YouTube, Google. So again, these things are also, you can be benefited by for example, I listen a lot of music, motivational music. I see a lot of YouTube videos, and you keep sending your videos also. So these kind of things helps you focus in the pandemic time. And once you have a definite goal, a fire to achieve it at any cost, then you start getting the result also. Yeah. So somebody said if the dream is big enough, the facts don't count. If your dream is big enough, you have a goal, you are willing to work for that, anything is possible, right? Yes. Thank you for your last question. I want to ask you, but let's say you want to become successful and they want to build this structured business and have a huge cash flow in the business. So, do you recommend me as just their sales coach for this industry that I am the guy who can make their job not easy, but I am the guy who can help them to achieve the level they want to achieve in their life and business? Yes, of course. Of course, I would love to recommend you to my colleagues and anyone who comes to you and seek your advice. So definitely it is highly recommendable to your services. And who, of course, as I said, the coach uh, must be very empathic and very holistic in nature. So you are one of them. So if whoever comes to you and seek your advice, I would say that he or she has not made a bad choice, has certainly made a good choice and very wise call. And results are not always there, means in terms of in short period of time. And it's a mutual game. It's a mutual process that requires as a coach basically coach uh, I would say coach, for example, you as a coach spend 45 minutes, 1 hour, 1 hour, 30 minutes.
once in a week. So, but gathering those knowledge and pouring those knowledge to your coachee in 45 minutes takes a lot of efforts. It might have taken you some weeks to prepare that data or that content to share with your coachee. So it takes a lot of efforts to create content and keep your coachee on the right track, as well as definitely uh, ultimately it's a coachee game. He has to drive. He has to drive. A coach, a business, for example, you coach doesn't become a driver. A driver has to be a coachee only because he has to drive the car. So definitely it's a win-win proposition. So I find you as a good guiding light who helps me drive my vehicle freely and but in a very disciplined manner. So once Okay. again, I highly recommend your services. Thank you very much, Kamal. And also sometimes aggressive, also getting you, pushing you hard, and like awaking up when you want to like get out of the track and get comfort zone and knock you, get up and make it happen, isn't it? देखिए मुझे हमेशा लगता है कि काम धन भेद सब सब लगा देना चाहिए रिजल्ट को लेने के लिए, राइट? तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो अगर बनता है, अगर आपको कोची को डांटने की जरूरत है आप डांटो, आपको उसको कई बार रेप्रिमेंड करना पड़ता है तो वो करें। तो जैसे मदर है, फादर है, अपने बच्चे को कहीं ना कहीं तो करती है ना, प्यार भी Yeah, करते हैं, तो yes. उनको डांटने का भी हक है, ऐसा बोला जाता है। टीचर है, वो आपको कितना लाइफ में कितना बढ़ाते हैं, और टीचर आपको कई बार डांट भी लगा देते हैं, मुर्गा भी बना देते हैं, राइट? तो बाद में आपको बाद में याद आता है यार उन्होंने सर बड़े अच्छे थे, वो मुर्गा बनाते थे लेकिन पढ़ाते बड़ा अच्छा। तो Exactly. वही आई थिंक आप में भी अगर वो क्वालिटी है तो लेटर इनिशियल बेस पर तो थोड़ी सी ईगो हर्ट होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बाद में रियलाइजेशन होता है कि हाँ भाई रवि साचन करके कोई कोच थे जिनसे मैंने गाइडेंस ली थी, और उनके ही गाइडेंस से या उनके एफर्ट से मेरा करियर अच्छा हुआ। तो ये स्टेटमेंट मुझे लगता है ज्यादातर लोग ये बोलेंगे आपके बारे में। Thank you very much, Kamal. Means a lot to me. I would say, Kamal, I think the trust has to be there. Like you are in the financial advisory for your customer, the trust is the most important. And I always say in my video, trust is the most. In my book, mein likha hai, trust is the. So if coach and a mentor mentee has a trust, anything is possible. Unless the trust is there, वो बंदा सुन के implement ही नहीं करेगा. And if trust is not there, the ego will clash. And the coach, person like me, has to have empathy. He has to come not just on his part, he has to go beyond it. That you have a privilege to guide one human being who has a family, who is going to make impact in this world. So it's like massage. You impact one person's life, they will impact others. So that's how it works. So it's all about giving and receiving. So the value creation. I personally see like that, right? And for me, it's a mission. Lastly, Kamal, I want to say what message you want to give to the people, to your industry, your fraternity, and the people who are not successful in this business, but they still want to be successful. They have a dream, and some people who want to get into the business. उनके लिए क्या message देना चाहिए? Because I think you have achieved success in the business, and you are the best person to give any message to them. Thank you so much for your kind words. I definitely not the best person to advise. I maybe the uh, I could be the but still I would say that be authentic, right? Be authentic, and firstly ask the one question: why I am in this profession. Hmm. You must know why you are here, why you are wasting your time if you do not want to make impact. If you're not earning, why you are not earning? Yeah. If giving time to the people, you're not meeting the people, you're not calling the people, why you are here. So firstly have a why. If really there is a deep desire that is driving you, then then think about how I can and what I can do in my profession. So I think three Mhm. questions are very impactful. Why? When you know that why I'm here and it is something that drives me, that is close to your heart, then start running, then start flying. And for what you need to again ask what I want to achieve and how you want to achieve. Definitely in that scenario, you need a lot of people in your journey.
definitely your colleagues, your family, your society, your mentors, your coach, you, for example, you as a coach can be very, very impactful and meaningful in this journey. So I think these a professional life lies on these three questions: why, what, and how. Rightly said. And the journey starts from the why. If the why is clear, most people don't have clarity in their why. And that's the first thing I do when they come to me, why you want to do it, why you are here. So anyway, I think the Kamal, first of all, thank you very much for your time and the giving the wisdom of your experience of 20 years. So anybody who want to be successful in the business, they can apply. And if you want to know about myself more, you want to know about this book, Sales Ka Sikandar, you want to get this book for free as a ebook, then you can go and find about myself, about my site, and you will definitely can know more about myself. Thank you very much. All the best. God bless. Take care.